students, after you have completed the synopsis of the chapter, units, dimensions and measurements, now it is time to go on to the MCQs and solve a few MCQs. दोस्तों synopsis करने में हमारे concepts revise होते हैं, पर हमारे JEE मेंस के लिए या नीट एग्जाम के लिए सिर्फ हमारा concepts revise करना जरूरी नहीं है, हमें उसके साथ साथ MCQs पे भी focus करना है, right? Because in the exam, you know, you have been asked MCQs which you need to solve. In case of a NEET examination, medical entrance examination, you know you have to answer 45 MCQs from physics. And if you are going for engineering entrance examination, that is JEE mains, you need to answer 30 questions from physics, 30 MCQs from physics. तो synopsis हमारे concept strong करते हैं, पर actual practice हमें MCQs की करनी है. Okay, so let us go on to a few MCQs in this particular chapter. Guys, इस chapter में कौन से चैप्टर में? हमारे यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट चैप्टर में अप्रोक्सीमेटली आई हैव टेकन 80 to 90 एमसीक्यूज, बिकॉज इट हैज बीन सीन दैट कम से कम हमारे जेईई मेन एग्जाम में या नीट एग्जाम में एक एमसीक्यू तो ये चैप्टर का आता ही आता है. ठीक है, इट हैज बीन वाइडली ऑब्जर्व्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम बेस्ड ऑन आवर लेगेसी क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स. इतनी आइडिया लग जाती है कि एक क्वेश्चन तो यहां से आता ही आता है. एंड लेट मी टेल यू, ये चैप्टर के क्वेश्चंस एमसीक्यूज कंपैरेटिवली इजी है. ओके, इजी एमसीक्यूज को इन माय लैंग्वेज आई कॉल लॉलीपॉप क्वेश्चन. लॉलीपॉप क्वेश्चन ऐसा है जो फटाफट हमें सॉल्व करने आना चाहिए. ओके, तो इजी एमसीक्यू होता है, बट कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, इजी होने के चक्कर में ये चैप्टर को भूल जाते हैं. ऐसा नहीं करना है. ठीक है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर. आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अगेन. माई नेम इज पेटीवाला मोहम्मद सलमान. आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, IIT मद्रास गोल्ड मेडलिस्ट, एंड आई विल बी टेकिंग दीज एमसीक्यूज. कम ऑन, लेट्स गो ऑन टू द एमसीक्यूज ऑन दैट पर्टिकुलर नोट. So the question is in front of you. There are 4 options. Let's start. Light year is a unit of. Okay. तो हमें दोस्तों ये बताना है कि जो light year ये particular concept होता है, it's a unit of time, mass, distance और energy. Okay. देखने पे तो लोग सोचते year, light year, year मतलब year time होना चाहिए ना. नहीं, ऐसा नहीं होता. Light year is actually distance or actually a concept of distance, right? It's nothing but a unit of डिस्टेंस. डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड इन लाइट ईयर्स. लाइट ईयर्स का मतलब जो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस होते हैं ना, जैसा डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द सन, ऐसे कुछ ऐसे बड़े बड़े जो डिस्टेंस होते हैं, और फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट मर्क्यूरी, इन्हें हम लाइट ईयर्स में मेजर कर सकते हैं. ठीक है, फाइन. सो लाइट ईयर इज एक्चुअली अ यूनिट ऑफ व्हाट? लेंथ. ओके, सो रिमेंबर द राइट आंसर इज लेंथ या डिस्टेंस. दैट इज ऑप्शन सी. Light year is nothing but it is a distance. ठीक है, fine. Go on to the next question. The next question, yeah, as you can see, the right answer is option C. The next question is this one, question number 2. Okay, so we have completed question number 1. Let's go on to the second MCQ. Which unit is not for length? Okay, so कौन सा length का unit नहीं है? Per sec, light year, आर्मस्ट्रॉन्ग, नैनो. ओके, सो गाइस लाइट ईयर तो लेंथ है, दैट इज डिस्टेंस है. आर्मस्ट्रॉन्ग भी हमारा लेंथ ही होता है. यू नो आर्मस्ट्रॉन्ग इज नथिंग बट 10 to the power minus 10 meters, right? 1 Armstrong, right? So Armstrong is also for length. But if you talk about nano, nano का मतलब 10 to the power minus 9 होता है. ठीक है, this is nothing but nano. It does not mean length. Okay, it's just a number. 10 to the power minus 9 is just a number. So I can say this is not length. This is not length, right? It is just a number. जैसे माइक्रो होता है 10 to the power minus 6. मिली होता है 10 to the power minus 3. Right? उसी तरह से नैनो होता है 10 to the power minus 9. It is just a number. It is it does not specify any length, right? So the right answer for what not is a length is option D, nano. Okay? Highlight होके आ गया? That's the right answer for this particular MCQ. Move on to the next question, that is question number 3. Which of the following is not equal to watts? Okay. So watt is nothing but it is the unit of power, right? सबको पता है. Power is measured in watts. राइट, वॉट्स. एंड पावर का क्या क्या फॉर्मूला है दोस्तों? पावर का फॉर्मूला आपको पता है, मैकेनिकल पावर इज बेसिकली वर्क अपॉन टाइम. सो वर्क इज मेजर्ड इन जूल्स, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड. सो 1 यूनिट ऑफ पावर इज जूल्स पर सेकेंड. दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए. बट दोस्तों हमें ये नहीं बताना है, हमें ये बताना है
okay, which is not watt. So this is watt. Okay, option number A is watt. Option number B को देखते हैं. Ampere into volt. You know, electrical power. Electrical power is given by the formula current into voltage into current, right? Electrical power. ये जो लिखा है, this was mechanical power. Remember that. This was mechanical power. Electrical power is given by the formula voltage into current. Right? कुछ basic formulas आपको पता होने चाहिए. Voltage in volts. Current is measured in amperes. So therefore current in ampere into volt, this is also power, right? Power यानी watts. Unit is watts, right? Power का unit is watts. Let's go on to option number C. Ampere square into ohms. Okay. So guys, इसी case में voltage power is nothing but V into I, right? But Ohm's law कहता है V is equals to IR, right? Ohm's law सबको आता है. V is equals to IR. तो अगर मैं V की जगह पे IR सब्स्टिट्यूट करूं, V की जगह पे if I put IR, I तो यहाँ पर बाहर है. So I into I will become I square. So power will become I square into R. I का unit is nothing but ampere. So this will be ampere square. And what is the unit of resistance? Resistance का unit is nothing but ohms, right? बराबर. So power का unit watts या watts जो कहना है. So watts is nothing but ampere square into ohm. So ये भी right है. Option number C भी right है. Hence the wrong answer. और basically the watt is not equal to option D, right? A B C के साथ match हो गया. यानी watt will not be equal to ampere per volt. That is not the right answer. Ampere into volt can be power, right? So with this we complete with your MCQ number 3. Go on to the next MCQ, that is MCQ number 4. Very simple. MCQ number 4 यही हो जाएगा. Nanometer is equals to. So अभी हमने देखा 1 nanometer. Nano का मतलब 10 to the power minus 9, right? Meter. अब nanometer is 10 to the power minus, nano is 10 to the power minus 9 meter. बराबर यहाँ देखो दोस्तों, तो everything is given in centimeter mainly, right? So how to convert meter to centimeter? So you know, what do you know? कि 100 centimeter make a meter, right? बराबर. So centimeter is nothing but 1 upon 100 meter. पता है आपको, right? Take 100 down. 100 centimeter is equal to meter, right? Take 100 down. So centimeter is 1 upon 100 meter, right? So और meter की जगह पे you can put down 100 centimeter. So 1 nanometer, meter की जगह पे 1 meter is 100 centimeter, right? So दोस्तों 100 is nothing but 10 to the power 2, right? So 10 to the power minus 9 plus 2 centimeter. Minus 9 plus 2 is minus 7. So this is minus 10 to the power 7 centimeter, right? So 1 nanometer is 10 to the power minus 7 centimeter. That is matching with your option number C. So the right answer to my question number MCQ number 4 is option C. Simple सा calculation. फटाफट calculation करके मैंने आपको दिखा दिया. Option number C. Go on to the next MCQ, that is MCQ number 5. A suitable unit for gravitational constant is. Now what is gravitational constant? कहाँ से आता है? Gravitation constant आता है हमारे Newton's law of gravitation से. What is that Newton's law of gravitation? Force is equals to G m upon r square या m1 m2 upon r square, right? m1 m2 upon r square. So G का unit निकालना है. So दोस्तों force का unit is Newton. G का तो unit calculate करना है. Mass is kg. This mass is also kg. Distance का ऐसा unit is meter square. So this will be meter square. So therefore यहाँ लेके चलिए आओ. So this will be Newton meter square is equals to G. Kg into kg will become kg square, right? Take this kg square down. So this will become Newton meter square per kg square. This will be equal to G, right? Fine. So therefore, is this in your option? Yes, that is there in your option number C, right? Unit for G, universal gravitational constant, is Newton meter square per kg square, matching with your option number C. Let's check out. Yes, that is the right answer for question number 5, MCQ number 5. Go on to the next MCQ, that is question number 6. These are very simple MCQs guys, ठीक है. अब जब हमने 12 11 स्टैंडर्ड पढ़ लिया, 12 स्टैंडर्ड पढ़ लिया, अब जब हम जेई पे आ रहे तो ये सब चीजें हमें it should be like a cakewalk, okay? Basics है, but you should be clear out with this, right? Clear with this. Come on. Go on to the next question, question number 60. The SI unit of pressure is, answer highlight हो चुका है. It's a very simple one. SI unit of pressure is, how to measure pressure? Pressure is measured in pascals, right? Pressure is nothing but you know it is force upon area, right? Force is measured in Newton,
Answer, area is measured in meter square. Newton per meter square is nothing but it is pascals. Remember that, okay? Unit is pascals. या PA भी लिखते हैं. Okay, so the right answer to this is option number A. As you can see, question number 6 का answer question number option A, Newton per meter square for pressure या pascals. Okay. Go on to the next question. That will be question number 7. Okay, question number 7 पे चलते हैं. In S is equals to A plus BT plus CT square, S is measured in meter and T is in seconds. Okay. The unit of C is, okay, so equation है हमारे पास, S is equals to A plus BT plus CT square. इस particular stuff में S is in meter. Okay. दोस्तों, when terms get added up, they should have the same unit. Remember that. So therefore इसका unit, इसका unit, इसका unit और इसका unit same होना चाहिए. Okay. So S का unit है meter. So therefore CT स्क्वायर का यूनिट भी होना चाहिए मीटर, राइट? बराबर CT स्क्वायर का यूनिट होना चाहिए मीटर. हमें निकालना यूनिट ऑफ C. T का, दिस इज मीटर, T का यूनिट इज सेकंड, राइट? टाइम इज सेकंड. सो यहाँ T की जगह पे सेकंड डालूंगा तो ये जाएगा सेकंड स्क्वायर. टेक दिस सेकंड स्क्वायर डाउन, सो दिस विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस विल बी द यूनिट ऑफ C. देयरफॉर C का यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Now look at the options after solving this, right? देखो, A का यूनिट मीटर, BT दोनों मिलाकर के यूनिट मीटर और CT स्क्वायर का मिलाकर के यूनिट मीटर होना चाहिए, राइट? कंबाइनिंग दिस टू, ओके? ये जो फुल टर्म का यूनिट सेम होना चाहिए. If you are adding up terms, then they should have the same unit, okay? Options देख लेते हैं. What is the one? So meter per second square. Second can come up and become -2, right? +2 can go up and become -2. So that is nothing but your option number D. Okay, so that's the solution to your question number 7. Yeah, answer is option D. Go on to the next one, that is question number 8. The unit of coefficient of viscosity in SI unit system is coefficient of viscosity. What is the formula which relates coefficient of viscosity? Where does it come? So guys, ये कहाँ पर आता है? ये आप लोग ने चैप्टर पढ़ा होगा फ्रिक्शन. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वालों ने चैप्टर पढ़ा है फ्रिक्शन इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, राइट? तो वो चैप्टर में एक फॉर्मूला आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. वहां उसका क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला से लेटर फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी द स्ट्रेस इज गिवन बाय शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय म्यू इनटू dv अपॉन dx. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट शियर स्ट्रेस. अब शियर स्ट्रेस क्या है आपको पता होना चाहिए. आपने इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ा है पार्ट 1 में. ओके, what is this? This is nothing but this is dx. Dx is nothing but it is a length, and if you talk about dv, dv is nothing but velocity. और म्यू ये क्या चीज है? दिस इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसका यूनिट मुझे निकालना है. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. सो दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने के लिए लेट अस पुट द अदर यूनिट्स. इन सब के यूनिट्स पुट अप कर लेते हैं. तो स्ट्रेस इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट? आपको पता है. दिस विल बी इक्वल टू म्यू. व्हाट इज dv? dv इज वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकंड. And length is meter, right? SI unit of length is meter. यहाँ से हम मीटर कैंसिल कर सकते हैं. This will now become Newton per meter square. This will become mu. And what is here out here? This is 1 per second, right? Second यहाँ जा सकता है, तो this will be Newton second meter square. This will be your mu, right? Unit of mu. So the unit of mu is Newton second per meter square, but actually it is nowhere in the options, right? So therefore हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूटन को भी ब्रेकअप करना पड़ेगा. Newton is nothing but the unit for force, right? So force का formula, basic formula क्या है? Force is mass into acceleration. Force is ma, ma, ठीक है? Mass into acceleration. Newton second law. So force का unit है Newton, mass is kg, acceleration is meter per second square, right? So Newton की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, keep the seconds per meter square separate. Newton को you can write down kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? सो फ्रॉम ईयर न्यूटन को जब हमने ब्रेक किया तो यू कैन जस्ट रिमूव सेकेंड एंड ईयर. सिमिलरली ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा. सो दैट यू विल हैव केजी मीटर सेकेंड, राइट? दिस विल बी नथिंग बट द यूनिट फॉर म्यू. Is this matching with any of the options? kg meter per second. So kg meter per second is matching with the option number D, right? देख सकते हो kg और डिनोमिनेटर में मीटर सेकंड, राइट? चेक आउट. यस, इट इज मैचिंग विद योर ऑप्शन नंबर डी. हेंस द राइट आंसर टू योर MCQ नंबर 8 इज ऑप्शन डी. गो टू द नेक्स्ट MCQ, MCQ नंबर 9.
Temperature can be expressed as a derived quantity in terms of any of the following quantities. Okay, so temperature को हमें express करना है. Can temperature be expressed in length, mass, length, mass and time? None of these. So guys, is temperature a derived quantity? No. Temperature is a fundamental quantity. Fundamental quantity को हम express नहीं कर सकते किसी भी quantity के form में. Derived quantity can be expressed, right? So I'll just write that down. Since temperature is a fundamental quantity, it cannot be expressed, comma, it cannot be expressed by any other form of quantity, any other fundamental quantity. डिराइव क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं पर फंडामेंटल क्वांटिटी को नहीं कर सकते, राइट? जैसे लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, ये सब जो क्वांटिटीज है इन्हें हम किसी और चीज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, राइट? हम इनमें में से किसी में भी यूज करके नहीं कर सकते. लेट्स चेक आउट. यस, दैट इज द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 9. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. Read the question. Which is the correct unit for measuring nuclear radius? Okay. दोस्तों, हमें पता है एक एटम बहुत छोटा होता है पर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है वो और भी ज्यादा छोटा होता है. कितना साइज होता है पता है न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस का साइज इज ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर -15 मीटर. इतना छोटा साइज ऑफ न्यूक्लियस, जिसे हम न्यूक्लियर रेडियस भी कभी कहते हैं, इज अबाउट 10 टू द पावर -15 मीटर. Okay, so we cannot use meter centimeter there. 10 to the power -15 is called as Fermi. It is called as Fermi. ठीक है, Fermi. और ये मीटर तो मीटर ही रहा. 10 to the power -15 को Fermi कहते हैं. ठीक है, fine. So the right answer to this will be correct unit for measuring the nuclear radii या size of the nucleus को मैं जैसा कह रहा था nuclear radii भी कह सकते हैं, right? So it is Fermi meter. So the right answer to this will be option D. Check out करते check कर लो चलो. Yes, our answer is right. 10th question का right answer is option D. Go on to the next question. Question number 11. Newton per meter square. Newton per meter square बराबर is a unit of. Newton per meter square is a unit of what? Option number A. Energy. Check करो. What is energy, guys? Energy is Joules basically. And what is Joules? Joules is Newton meter, not Newton per meter square. तो ये तो नहीं हो सकता. Momentum. Assuming that is linear momentum. So what is momentum? So momentum is mass into velocity. Mass into velocity. Mass is kg, velocity is meter per second. Okay, second per second. Okay. तो फिर भी directly तो ये Newton per meter square नहीं आ रहा है. Option C देखते हैं. Force. Force is measured in Newton. Newton का breakup क्या अभी अभी देखा था kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिर से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं आया. ऑप्शन डी देखते हैं. प्रेशर. प्रेशर इज फोर्स पर अपॉन एरिया, राइट? बराबर एक साइड से पढ़ते आ रहे हैं. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर. हेंस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ डी, right? Pressure. Newton per meter square also called as pascals. Okay, so the right answer to this is pressure. Let us check out. Yes, that is the right answer. Go to the next question now. Question number 12. The SI unit of momentum. Okay, अभी यही की कर लिया. SI unit of momentum. Momentum is mass into velocity. Mass is kg. Velocity is meter per second. Let's look at the option. kg meter per second. Check करो. कौन सा? Option B है, right? So the right answer to question number 12 is option B. kg meter per second. Let's highlight it out. Yes, that is the right answer. Okay. Next question पे चलते हैं. Question number 13. The unit of specific resistance is, okay. Specific resistance. What is specific resistance, guys? You know the formula for specific resistance. एक formula पढ़ा था. R is equals to current electricity में chapter में पढ़ा था. R is equals to rho L upon A, where R is nothing but resistance, rho is nothing but specific resistance, L is length, A is area, right? तो हमें specific resistance का निकालना unit. Resistance का unit, you know, it is ohm. Let's keep rho as it is. Length is measured in meters. Area is measured in meter square. बराबर?
यू कैन कैंसिल अप मीटर ये वाला, तो ये ओम इंटू मीटर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने की वजह से. ओम इंटू मीटर विल बी द यूनिट ऑफ रो, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. व्हाट इज दिस? दिस इज specific resistance, right? So the unit of specific resistance is ohm meter. Ohm meter या ohm centimeter भी कह सकते हैं, ठीक है? Centimeter या meter is length, right? So it is ohm centimeter. SI unit will be ohm meter, but अगर centimeter लिखना है तो भी चलेगा क्योंकि option में सब centimeter दिया, right? So the right answer to this will be ohm centimeter. That is there in your option number C. Hence the right answer is option C. Let us check. Yes, that is the right answer. Go on to the next question, guys. That is question number 14. Very simple. Number base of SI unit is, how many numbers are there in an SI unit? There are 7 SI units, right? कितने होते हैं? 7 SI units. हमें पता है कौन कौन सी चीज, right? रिवाइज करना है तो रिवाइज भी कर लो. Time, length, mass, temperature, luminous intensity, number of moles of a substance, right? उसी तरह से और भी एक और होता है, right? Together we have around 7 fundamental units, okay? So that answer is option B, that is 7, okay? Fine. Go on to the next one. 1 kilowatt hour is, next one is question number, okay, question number 14 का answer 7 था. Let's go on to the next one, that is 1 kilowatt hour. Now kWh is nothing but kilowatt hour. किलो का मतलब 10 to the power 3, watt वैसा का वैसा, R can be written as seconds में लिखना है, okay, joules में लिखना है, we have to write this in joules. So let's write R in terms of seconds. So एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं. 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं, राइट? सो R can be written as 60 into 60 सेकंड, हमें पता है ये बात. ओके, सो ये कितना हो जाएगा? 1 kilowatt hour therefore will become, this is 10 to the power 3 is 1000, right? 1000. 60 into 60 will become 3600, okay, watt seconds, okay, watt seconds. Now दोस्तों ऑप्शन थोड़ा सा देखोगे तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? दिस विल बी रिटन एज 36, 1 2 3 4 5 0, so 36 into 10 to the power 5 watt seconds, right? Watt is nothing but Newton meter per second, right? Watt होता है Newton meter per second. Work upon time. Work is Newton meter. Time is seconds. तो यहाँ से second cancel हो गया. Newton meter is nothing but it is joules, right? Newton meter is joule. So therefore this is nothing but 36 into 10 to the power 5 joules. That is there in your option B. Hence the right answer to your question number 15 is option B. Let us check it out. ठीक है, सिंपल मैंने ओपन अप किया, दैट्स इट. आई होप ये समझ में. आर को मैंने सेकंड कैसा लिखा, राइट? यू नो 1 hour is 60 minutes, 60 minutes के 60 seconds, 1 minute is 60 seconds. So उस तरह से ब्रेकअप करके लिखा. So that is matching with the option number B, right? Go on to the next question, that is question number 16. Unit of moment of inertia in MK system. Okay, moment of inertia. What is moment of inertia? कहाँ पढ़ा था? Rotational motion chapter में पढ़ा था, right? Moment of inertia is mass into square of the distance